So, hello everyone, good evening. So, we are back in live again and with the Emerge batch. And the chapter that we were dealing and talking about was the human reproduction. And आज जो हम जिस चैप्टर के बारे में जब वो जो थर्ड पार्ट इस चैप्टर के बारे में जो हम डील करने वाले हैं, that is again going to be a very crucial and an important chapter in this aspect. All right. And we are going to deal the last some of the few important topics of this chapter that includes fertilization and implantation, then there is gestation, parturition, pregnancy, and all those things. So we are going to deal with that aspect. All right, just a moment. Okay, so this is the case. So let us quickly proceed further with the important topics of this chapter. So menstrual cycle तक already हम लोगों ने deal कर लिया था and we have already talked about this part. All right. So we are going to today talk about the fertilization and the implantation part. All right. Now, in this process of fertilization and implantation, the few things, the few important things which are important to know is that कि fertilization का जो process होता है, that seems to be very easy, but it doesn't sounds like easy. All right. So ऐसा है basically process जिसमें कि जब हम population की बात करते हैं, all right. Fertilization simply हम define कैसे करेंगे? Fertilization is basically defined as a process जिसमें कि there is fusion of male and female gametes. That means there is fusion of sperm and egg. So since there is fusion of sperm and egg, which is also called as ovum, so this is going to result into the formation of a diploid product, which is called zygote. So this is the case. So ऐसा होता है. So during copulation, which is called as the coitus, the semen is released by the penis into the vagina of the female. Now, some of the key points are there. इसमें आपको definitions कुछ एकदम दिमाग में रखना है, एकदम ध्यान में रखना है. जैसे कि insemination का definition, which means the release of semen inside the female reproductive tract. उसको आपको बिल्कुल दिमाग में and बिल्कुल ध्यान में रखना है. ठीक है? Now, the motile sperms, they basically swim rapidly through the cervix, enters into the uterus, and finally reaching the ampullary region of the fallopian tube. So generally जो passage होता है, so if I just draw a simple figure, एक diagrammatic section अगर मैं बनाऊं, so this is going to look like this. ये कुछ ऐसा होता है. All right. And just a diagrammatic section for showing you the passage actually. तो जो sperm की entry होती है ना, वो इस side से होती है. That means cervix से होती है. So once the sperm, they are released over here. जैसे ही sperms जो होते हैं ना, they are released through the insemination process. They are going to travel their passage towards the fallopian tube like this. All right. So ovum जो release होके आता है ना, ovum इस part पे release होके आता है, which is the ampullary isthmic junction. So these sperms, they are actually going to attach to this ovum around it. तो ये जो movement हो रहा है, ये जो passage हो रहा है, आप देख सकते हैं वो unidirectional होता है. That is actually unidirectional. This you need to know. ठीक है? तो वही इसमें बोला है कि it passes through the cervix. तो ये वाला जो part हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला cervix का part हो जाएगा. So it passes through the cervix, entering into the uterus. ये वाला uterus का part हो गया. And ultimately going into the fallopian tube. ये fallopian tube का part हो जाएगा. ये होता है. Finally reaching the ampullary region of the fallopian tube. Now the ovum that is released by the ovary is also transported at the ampullary region where fallopian tube, where fertilization takes place. तो यहाँ पर finger-like projections होते हैं and that bears the ovary. तो ये जो ovary होगा, ovary से ovum यहाँ पे release होके already यहाँ पर आ चुका है. Ampullary junction में, ampullary isthmic junction पे already ये आ चुका होता है. All right.
और यहाँ पे साइमल्टेनियस होता है। तो फर्टिलाइजेशन का कंडीशन एक होता है और वो कंडीशन ये होता है that fertilization can only occur if the ovum and the sperms they are transported simultaneously to the ampullary region. जब दोनों साथ में simultaneously जाएंगे ना तभी fertilization होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, because this is also the reason that why not all copulations leads to fertilization and pregnancy. तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि all the sexual intercourse or all the kind of or any kind of you can say copulation or coitus can lead to pregnancy, can lead to fertilization and pregnancy. So this is the case. क्यों? क्योंकि दोनों का simultaneous basically movement होना चाहिए। simultaneous समझ लीजिए transportation होना चाहिए towards the ampullary isthmic junction. So that is the case. All right. Now the next thing to note in this part is that now the process of fusion of sperm with an ovum, that is called fertilization. And during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum. So you can see in this figure कि ovum के basically 3 layers होते हैं, ठीक है? कोई भी typical ovum जो होता है, so ovum का generally 3 layers होता है. So there are 3 layers that surrounds the ovum. 3 layers. So the first one is basically called as the corona radiata. ये आपको यहाँ पे cells दिख सकते हैं, तो ये corona radiata होते हैं. So the first layer is called as corona radiata. Just a moment. So the first layer of cells that is actually called as corona radiata, जो यहाँ पे आपको दिखता है. The second layer of cells that is important over here to note in this aspect is that कि इसमें जो second layer होता है that is called as the zona pellucida layer. So जो second layer हो जाएगा that is called zona pellucida. Let me just refresh this page once. Just a moment. So we were at this point. Okay, so we were at this part. So I was telling you कि basically जो ovum होता है उसके 3 layers होते हैं. So one is called as the cells of the corona radiata, which you can see over here. Then there is zona pellucida layer, which you can see over here. And then there is a perivitellin membrane, जो कि perivitellin space में होता है. तो ये वाला जो आपको अंदर का space दिख रहा है ना, this is called as perivitellin membrane, which is also called as the plasma membrane also. इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंसिडर करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन एज वेल. ऑलराइट, अब इसमें जो बात ध्यान देने वाली बात है वो ये कि आउट ऑफ ऑल दीज 3 लेयर्स इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेयर हो जाता है वो जोना पेल्यूसिडा लेयर होता है. सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन ओवर हियर कि ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होता है फर्टिलाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जिसके ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, that is the zona pellucida layer. So you can see that during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane
that blocks the entry of additional sperm. तो ये वाला जो लेयर आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज द जोना पेल्यूसिडा. ये काफी थिक होता है, बहुत ही मोटा लेयर होता है. तो इसमें चेंजेस होते हैं. जब कोई एक स्पर्म इस जोना पेल्यूसिडा लेयर को क्रॉस कर जाता है ना, तब वो जो एडिशनल स्पर्म्स उसके अराउंड में होते हैं ना, उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है. कैसे ब्लॉक होगी? इसलिए ब्लॉक होती है क्योंकि वो जो पेरीवाइटलिन, जो जोना पेल्यूसिडा लेयर अलोंग विद दैट जो पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें चेंजेस हो जाते हैं. उसमें कैसा चेंजेस होता है? उसमें उसके पोटेंशियल मेम्ब्रेन में चेंजेस होते हैं. दैट मीन्स as soon as one single sperm makes an entry towards the ovum, जैसे वो एक जो sperm होगा वो ओवम के टुवर्ड्स में एंट्री लेगा ना, तो जो पूरा का पूरा आपका जो मेम्ब्रेन है ना, पेरीवाइटलिन मेम्ब्रेन, वो यूजुअली जनरली आपका नेगेटिवली चार्ज होता है बिफोर द एंट्री. लेकिन एक स्पर्म जैसे एंटर करता है ना, तो वो तुरंत वो पॉजिटिव चार्जेस वाले हो जाते हैं. मतलब आप समझिए कि इनिशियल, अगर मैं ऐसे बताऊं, तो स्पर्म जो है, if a sperm is in contact like this, ठीक है, तो इसके अराउंड में इनिशियली ये नेगेटिव चार्जेस रहते हैं बिफोर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द ओवम, हियर लाइक दिस. ठीक है. लेकिन जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, सो आफ्टर स्पर्म एंट्री इफ यू आर गोइंग टू सी, जस्ट अ सेकंड. So after sperm entry when you are going to see, तो उस केस में जनरली क्या होगा कि जैसे ही स्पर्म इस साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है like this, and this is the nucleus of the ovum which you can see over here. ठीक है. तो ये ना स्ट्रक्चरल चेंजेस इंड्यूस हो जाता है. दिस इंड्यूसेस द पोटेंशियल चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और ये पूरा का पूरा जो नेगेटिवली चार्ज था, ये पूरा का पूरा अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. ठीक है. तो जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं ना, वो एडिशनल स्पर्म्स रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो स्पर्म सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वो पॉजिटिव वाले को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते. दैट्स हाउ दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम पॉलीस्पर्म. So that is the case. So this ensures that only one sperm can fertilize an ovum, and the secretions of acrosome helps the sperm entering into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. ठीक है. तो इस तरीके से एक ही स्पर्म की एंट्री इंश्योर होती है. द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म गेट अल्टीमेटली ब्लॉक. तो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द केस. नाउ मूविंग अहेड. So here, so you can see just a second. All right, so this is the case. Now with the implantation part, when we are going to see, ठीक है, तो कुछ stages होते हैं जिसमें कि ये पूरा का पूरा जो process होता है implantation का, that is ultimately finished. All right, just a moment. So that is the case. Basically implantation होता क्या है? Implantation वो process होता है. तो हम लोगों ने fertilization का पूरा process देख लिया. Now implantation is one such process जिसमें कि जो zygote बन गया, zygote फिर ना successive developmental stages जाता है, जिसमें कि पूरा का पूरा ये development process होता है. ठीक है. So that is called as वो development process तभी हो पाएगा, मतलब आगे तभी proceed कर पाएगा जब जाइगोट का एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जब वो बनेगा. एज सच जाइगोट कभी भी जाके यूट्रस में फिट नहीं बैठ सकता, बिकॉज जाइगोट अभी भी बहुत ही इमेच्योर बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह रहता है, तो उसको अभी और डेवलप होना बाकी रहता है. सो फॉर दैट पर्पस जाइगोट तक बहुत सारा ना सक्सेसिव स्टेज होता है जिसमें इसका कंप्लीशन जो होता है दैट इज बीइंग कैरिड आउट. जस्ट अ मोमेंट.
तो वो जो सक्सेसिव स्टेजेस होते हैं, वो सक्सेसिव स्टेजेस इस तरीके के बेसिकली होते हैं दैट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्ट्रक्चर्स। वो एक या दो स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनाते हैं एंड अल्टीमेटली उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू थिंग्स जो होते हैं दोज आर कैरिड आउट। ठीक है, जैसे कि अगर जाइगोट बना तो जाइगोट के बाद अल्टीमेटली जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज मॉर्यूला, व्हिच यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो जाइगोट के बाद अल्टीमेटली मॉर्यूला बनता है। ठीक है, जाइगोट बेसिकली बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो मॉर्यूला इज अ सेल जो कि 8 सेल स्ट्रक्चर होता है। मॉर्यूला के बाद अल्टीमेटली मॉर्यूला डिवाइड करता है, तो वो अल्टीमेटली हमारा बनाता है दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो मॉर्यूला के और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में भी कई सारे स्टेजेस होते हैं, देयर आर वेरियस स्टेजेस दैट आर प्रेजेंट। ठीक है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टोसील आता है, ब्लास्टोसील के बाद यू नो देयर इज गैस्ट्रुला आता है, गैस्ट्रुला के बाद फिर ब्लास्टो आपका अल्टीमेटली जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है। तो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट आपको उतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक चीजें याद रखनी कि कौन से स्टेप में अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन इज देयर। ठीक है, so this morula ultimately continues to divide and transforms into blastocyst as it moves further into the uterus. Now the blastomeres in the blastocyst, they are arranged into an outer layer which is called trophoblast. So basically अब आप जब देखते हैं ना, जब आप blastocyst का structure देखेंगे, so this is something look like this। यहाँ पे मैं बना देती हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अल्टीमेटली कुछ दो लेयर्स में बेसिकली डिवाइडेड होता है, आउटर लेयर, दूसरा इनर लेयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनर लेयर के जो सेल्स हो जाएंगे दैट बेसिकली लुक्स लाइक एक दूसरे से जॉइंड अप रहते हैं। So this gives an appearance like this। ये पूरी तरीके से ना ऐसे भरा रहता है एंड इसी से फिर स्टेम सेल्स भी निकलता है अल्टीमेटली लाइक दिस। या इसमें डॉट्स होते हैं, दैट मींस रिप्रेजेंटिंग सिंगल न्यूक्लियस, हैप्लॉइड होते हैं बेसिकली सेल्स इसके लाइक दिस। एंड ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट हो जाएगा दिस इज कॉल्ड दिस वन। ऑलराइट, दिस इज द केस। तो ये वाला होता है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके बेसिकली दो लेयर्स हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ब्लास्टोसिस्ट। कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है आई गेस। दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, दिस वन। ऑलराइट, सो इसके दो लेयर्स हो जाएंगे। सो दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस बिकम्स द इनर लेयर। तो ये जो आउटर वाला लेयर होता है दिस इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। So this is called as trophoblast, while this inner layer that is called as inner cell mass. जिसको शॉर्टली हम ICM भी बोलेंगे, इनर सेल मास को। सो दिस इज द केस। क्लियर? तो ट्रोफोब्लास्ट होता है एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि अटैच्ड होता है ट्रोफोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड इनर सेल मास। तो ये स्ट्रक्चर और यही मेन स्ट्रक्चर जो होता है वो अल्टीमेटली यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। That means it sticks to the wall of the uterus. So this is going to stick to the wall of the uterus. Implantation. ठीक है? तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है लेयर that gets attached to the endometrium of the uterus. जो यूट्रस का जो इनर मोस्ट लेयर उससे अटैच हो जाएगा, while जो inner cell mass होता है उसका मेन फंक्शन ये हो जाएगा that this is going to differentiate into embryo. तो इनर सेल मास जो होगा दिस विल अल्टीमेटली गिव राइज टू एम्ब्रियो। इसी से हमारा पूरा एम्ब्रियो जो होता है बेबी का, दैट मींस बेबी डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वो इसी से होता है। व्हाइल ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो स्टिकिंग में हेल्प करता है, जो कि अल्टीमेटली आपका प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड वो सब बनाने में हेल्प करेगा। सो आफ्टर द अटैचमेंट
the uterine cells, they divide rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called as the implantation process leading to pregnancy. कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जब तक implantation नहीं होगा pregnancy won't happen. So implantation होना बहुत जरूरी है, otherwise the pregnancy won't take place. All right, so that is the case. Clear? ये बात हो जाएगा. Now, अब हम बात करते हैं next topic की, which is considered to be as the pregnancy and the embryonic developmental state. Now, pregnancy and embryonic development की जब हम बात करते हैं, तो implantation के just बाद जो main process आएगा, that is considered to be as your pregnancy. आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, if I just maximize this part, ये वाला, तो implantation के बाद यूट्रस से, इनफैक्ट यूट्रिन के जो अंदर के लेयर्स होते हैं ना, एंडोमेट्रियम, वहां से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर करता है ट्रोफोब्लास्ट में, which is called as chorionic villi, that is surrounded by the tissue of uterus and material and the maternal blood, इससे ही सराउंडेड होता है. तो बेसिकली आप अगर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो ये वाला जो लेयर है, लेट मी यूज अ डिफरेंट का, ये वाला जो आपको लेयर होता है ना, ये वाला जो लेयर होता है, इसी में कोरियोनिक विलाय बनता है, इसी में इंटरडिजिटेशन होता है, तो वो प्लासेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा. सो दैट इज द केस. सो यू कैन सी दिस इज द प्लासेंटल विलाय व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये प्लासेंटल विलाय होता है. तो ये कोरियोनिक विलाय जब यूट्रिन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेट हो जाता है, तब वो एक जॉइंटली एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएगा बिटवीन द एम्ब्रियो and the mother, and that is called as the placenta. So that's why placenta is considered to be as a structural and a functional unit between the mother and the fetus. Mother and fetus के बीच का ये structural and functional unit इसको हम मानते हैं. ठीक है. Now placenta का function क्या हो जाएगा? That placenta is very very important for facilitating the supply of oxygen and nutrients to the embryo, and also helps in removal of carbon dioxide and excretory or waste materials which is produced by the embryo. मतलब ये दोनों काम करते हैं. मतलब आप समझिए कि जो भी important चीजें होंगी, जो भी nutritious चीजें होंगी, ऐसे समझिए, whatever will be the nutritious thing, जो भी nutritious चीजें होंगी, that will be given towards the embryo or the fetus. Nutritious चीजें मतलब क्या? मतलब कि blood हो गया, then there is your all the food materials, any kind of juices or any kind of water. तो वो जो part होता है nutrition के जितने भी portions होते हैं ना, that is being supplied from mother to the fetus. और fetus से mother क्या receive करती है? Fetus से mother receive करती है all the excretory products, whether it is in the form of excreta or it is in the form of gases, which is carbon dioxide. तो वो सब हो जाएगा इसमें. ठीक है. Now, ये जो placenta होता है, this is connected to the embryo through an umbilical cord, which helps in the transportation of substances to and from the embryo. ये basically transportation of substances में help करता है to and from the embryo, and also helps, ये मतलब समझ लीजिए कि placenta तो एक unit हो जाएगा, structural and functional unit, and उसके अंदर में जो main tissue, जो main cord, जो कि supplying में help करेगा ना, that is considered to be as the umbilical cord. वो umbilical cord होता है. So placenta, that's why also sometimes acts as an endocrine tissue. तो ये आपका endocrine tissue की तरह भी act करता है. मतलब एक ऐसा tissue जो कि अगर requirement होगी तो hormones के secretion का भी काम करेगा. Endocrine है, तो definitely it will also be responsible for secretions of hormone as well. यहाँ पे देखिए. So it also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin, which is called HCG, human placental lactogen, which is called HPL. ये बहुत ही important hormones हैं जो आपको by heart learn कर लेना है क्योंकि ये question पूछता है. ठीक है. Then there is estrogens, progestogens and specific hormones एकदम याद कर लीजिएगा. ठीक है. In the later phase of pregnancy,
a hormone which is called relaxin. Now this is again very very important. मतलब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि बाद में जब पार्चुरेशन का प्रोसेस हो जाता है एंड डिलीवरी हो जाती है बेबी की, तो उस केस में एक दूसरी हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, दैट इज गोइंग टू रिलैक्स. रिलैक्सिन का मतलब होता है दैट इज गोइंग टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ द यूट्रस. वो यूट्रस के मसल्स को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा जब बेबी का डिलीवरी हो गया है तब. ठीक है. So this hormone which is relaxin, that is also secreted by the ovary. वो ovary के through release हो जाएगा. Now let us remember that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. ये समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी वाले हॉर्मोन्स के नाम है. ये कभी भी नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमन फीमेल के बॉडी में रिलीज नहीं होते. ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में ही रिलीज होंगे. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Now in addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogens, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine, etc., they are increased to several folds in the maternal blood. Now apart from these hormones, कुछ hormones ऐसे भी होते हैं जैसे cortisol हो गया. cortisol जो होता है that is very very important for your carbohydrate metabolism, है ना. Then there is thyroxine. Thyroxine जो होता है that is very very important for iodine metabolism और basal metabolic rate के लिए बहुत important होता है thyroxine. BMR को regulate करता है वो. तो BMR के regulation के लिए this hormone is very very again very very important. तो ये आपको ध्यान में रखना है. And again ये सब कुछ ऐसे not only these hormones but कुछ ऐसे specific hormones भी होते हैं ना जो मदर के ब्लड में काफी हद तक बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि अब मदर का रिक्वायरमेंट ही सिर्फ नहीं है, मदर से वो बेबी का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना है. तो उस बेबी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल होने के लिए दिस इज वेरी वेरी एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि वो चीज आपका अल्टीमेटली जो होगा दैट इज गोइंग टू गिव राइज टू वो अल्टीमेटली न्यू फॉर्म बनाए. तो दैट इज द केस जो आपको ध्यान में रखना है. नाउ the next thing to note in this part is that increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy. ये सारे जो specific hormones होते हैं याद रखिएगा. ये सारे specific hormones का increase level क्यों जरूरी है? क्योंकि ये increase level जो होते हैं they are going to support the pregnancy. Without these increased level of hormones, pregnancy and embryonic development and all those things they cannot be supported. तो इसके वजह से ये support होता. ये जो hormones होते हैं they're going to support all these factors. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा see this is the umbilical cord. ये अंदर का जो structure आपको दिख रहा है this is the umbilical cord and this is the placental villi. Why placental villi? Because that this means that chorionic villi along with placenta. This is chorionic villi along with placenta. तो ये वो वाला पार्ट हो जाएगा. ठीक है. And this is the cavity of the uterus, this is the yolk sac and this is our embryo. तो ये हो जाएगा. And this is the way through which the process of the delivery will take place. ये वाला पार्ट. ठीक है. This is this. सो ये हो जाएगा ना. इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, अब इम्प्लांटेशन हो गया और कुछ जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे उनका फॉर्मेशन भी हो गया. अब इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हेन वी आर गोइंग टू सी ना, तो इम्प्लांटेशन के जस्ट तुरंत बाद अगर आप जब देखेंगे ना तो आपको इनर सेल मास जो मैंने आपको अभी जो ब्लास्टोसिस्ट में बताया हुआ था, इनर सेल मास जो होता है ब्लास्टोसिस्ट में that ultimately develops and differentiates into embryo. Inner cell mass embryo में develop करेगा. अब जब embryo बनता है ना तो 3 germinal layers बनते हैं, 3 germ layers बनता है which are again very very crucial and important और इसको ध्यान में आपको रखना है. तो inner cell mass से हमारा embryo बना, so ICM जिसको हम बोलते हैं, क्या? So ICM से एम्ब्रियो बन गया
और एम्ब्रियो जो होता है उसके फिर अल्टीमेटली 3 जर्मिनल लेयर्स हो जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मेसोडर्म, एंड दिस इज एंडोडर्म. तो 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं जो कि पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर को बनाएंगे पूरे, क्योंकि उन तीनों जर्मिनल लेयर से ही पूरा एम्ब्रियो बनता है. इनटू एन आउटर लेयर, तो दिस इज एन आउटर लेयर व्हिच इज एक्टोडर्म, then this is going to give rise to an inner layer which is endoderm, and a mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm. फिर एक बीच का लेयर अपीयर करता है उन दोनों के बीच में, and that is called as the mesoderm. मतलब बनने के लिए दोनों बन जाते हैं, बनने के लिए दोनों बन जाते हैं this one which is considered to be as the ectoderm and endoderm, but ectoderm endoderm बनने के बाद उनके सेल्स डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं regarding the third important layer, the middle layer, which is called as the mesoderm. Just give me a moment. Just a moment. Yeah. So ये वाला पार्ट हो जाएगा. Yeah. Clear? तो ये हो जाएगा. अब हमें जो ध्यान देना है इस पूरे पार्ट में वो ये ध्यान देना है कि 3 जर्म लेयर्स बन गए, क्योंकि ये 3 जर्म लेयर्स जो होगा वो अलग अलग चीज बनाएंगे. जैसे एक्टोडर्म जो होता है वो स्किन एंड नर्वस टिश्यू बनाता है. मेसोडर्म जो होता है that is going to give rise to all connective tissues and essential organs. मतलब हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं, जितने भी एसेंशियल ऑर्गन्स बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या? कनेक्टिव टिश्यूज मतलब ब्लड हो जाएगा, बोन हो जाएगा, then there is muscles, then there is gonads, then there is kidneys, lungs. ये जितने भी essential organs या जो भी सारी चीजें होती है ना वो हमारे इसमें क्या कहते हैं मेसोडर्म के थ्रू बनता है. एंड एंडोडर्म जो होता है वो सारे लाइनिंग्स बनाता है, हमारा गट ऑफ द लाइनिंग्स एंड एपिथेलियल कैविटी एंड ऑल दोस थिंग्स. मतलब हमारा पूरा पूरा आप समझ सकते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो एंडोडर्म बनता है. वो एंडोडर्म पूरा एक लाइनिंग बनाता है कि कहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शुरू होना है, किधर पर एंड होना है. मतलब माउथ से शुरू होते हुए एनस तक की पूरी लाइनिंग जो होती है वो एंडोडर्म बनाता है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. Now these 3 layers they give rise to all tissues of or organs in the adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass also contains a very important cell which is called stem cell. अब ICM में इन सारे germ layers के अलावा है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. उनको हम स्टेम सेल्स कंसिडर करते हैं बिकॉज दीज स्टेम सेल्स दे हैव द पोटेंसी ऑफ गिविंग राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये सारा टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बना सकते हैं, इनका ये फीचर होता है. ठीक है, नाउ सो let us just look into the question that what are the major features of embryonic development at various months of pregnancy. तो अगर हमें ये देखना हो कि अलग अलग मंथ्स में बेबी का क्या क्या फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होता है, सो वी कैन लुक इनटू दिस पार्ट एज वेल. वी नो कि ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 मंथ्स की होती है. ठीक है, दिस इज अ बेसिक थिंग दैट एवरीबॉडी नोज. तो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में बेसिकली 3 अलग अलग कंडीशंस हो जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज योर this one first trimester. basically पूरा का पूरा 9 months 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होता है. the 9 months को अगर हम कंसिडर करें so that is divided into 3 trimesters. थ्री ट्राइमेस्टर्स में ये डिवाइडेड होता है. 3 ट्राइमेस्टर्स मतलब कि ईच ट्राइमेस्टर, हर ट्राइमेस्टर जो होता है वो 3 मंथ को इंडिकेट करता है. सो दैट इज द केस. ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है. क्लियर ना. अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली बात है वो ये हो जाएगा कि अल्टीमेटली what are the different organs which are formed during each trimester or during each month when we are going to see that. So ह्यूमन बींग्स में जब हम देखते हैं तो आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट बनता है. सबसे पहले एम्ब्रियो का हार्ट बनना जरूरी है. व्हाई एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म?
क्योंकि सीधी सी बात है, हार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द ब्लड पंपिंग ऑर्गन, एंड इफ इट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन तो उसी से सारा न्यूट्रिशन ट्रैवल होना है टुवर्ड्स द बेबी. सो दैट्स व्हाई it is considered to be very, very important. Now, the first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. तो इसीलिए डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं for listening to the heart sound, that whether the heart is working or not. Now, by the end of the second month of pregnancy, you can say fetus के limbs develop होने शुरू हो जाते हैं, digits develop होने शुरू हो जाते हैं. Second month में छोटी छोटी उंगलियां limbs and digits बनना शुरू हो जाता है. Now by the end of 12 weeks, जिसको हम first trimester बोलते हैं, जितने major organ systems होते हैं वो बन जाता है. For example, the limbs and external genital organs are well developed, and first movement जो होगा fetus का, and appearance होगा जो hair में, head में जो बच्चे का appearance होता है, that is usually observed during the 5th month. वो 5th month तक दिख जाता है. And by the end of the 24 weeks, मतलब कि second trimester तक अगर हम देखेंगे, 6th month तक अगर हम देखेंगे, तो body जो होता है baby का, that is very much covered with fine hair. The eyelids, they are going to separate, eyelashes बन जाते हैं, and 9 months के बाद, 9 months of pregnancy के बाद, the fetus is fully developed and is ultimately ready for the delivery process. तो ये basically थोड़ा आपको learn करना पड़ेगा कि कौन से month में कौन सा part baby का develop हो जाता है, and ultimately कैसे होता है, because this might be asked in your examination as a kind of a GK type of a question के form में ये पूछा जा सकता है. So that's why this is very, very important. All right, so this is the case. Now moving on with the next part. Just a second. Now, the next part is basically the last part, and that is considered to be as the parturition and lactation. All right. तो जब हम parturition and lactation की बात करते हैं, जो average duration होती है human pregnancy की, parturition का मतलब होता है delivery of the baby, you can say. All right. So baby की delivery होना after 9 months of successful gestation period, जिसको हम बोलते हैं. So average duration जो होती है human pregnancy की, वो 9 months की होती है, which is called as the gestation period, which is ultimately called as gestation period. Clear? 9 months के duration. Now 9 months का जो ये pregnancy का period होगा ना, that is ultimately will result into vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy, resulting into expulsion or delivery of the fetus. मतलब 9 months जैसे ही complete हो जाएगा, this is going to result 9 months के बाद ही ना एक reflex action carried out होता है mother के body में, and that reflex action is called as fetal ejection reflex. उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप mention भी हुआ है, उसको हम बोलेंगे fetal ejection reflex. Now what is fetal ejection reflex? देखिए 9 months जैसे ही complete हो जाता है ना, तो ये indication मिलना शुरू हो जाता है कि baby अब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है. नाउ इट नीड्स टू बी डिलीवर्ड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी और द मदर्स बॉडी. ठीक है, तो मदर के बॉडी से अगर वो बेबी को बाहर निकालना है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरेटेड, एंड दैट रिफ्लेक्स एक्शन इज जनरेटेड फ्रॉम बोथ साइड. ये चीज आपको ध्यान में रखना है. ये मदर के थ्रू भी, मदर से भी जनरेट होता है एज वेल एज बेबी से भी जनरेट होता है, दोनों से ही ट्रिगर होता है. तो जब ये ट्रिगरेंस होता है तो दिस ट्रिगरेंस रिजल्ट्स इनटू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मायोमेट्रियम इन द यूट्रस. ये क्या करता है ना, जो सेकेंड लेयर होता है यूट्रस का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, जिनका मेन काम होता है कि ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन. उसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि this process of delivery of the fetus, which is called childbirth, that is called parturition. Now parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. इसमें neuroendocrine mechanism involved होता है. Why? क्योंकि ये reflex action के through generate हो रहा है और उसमें hormone release हो रहा है. That's why. Now the signals जो होगा parturition का, वो fully developed fetus और placenta दोनों की तरफ से induce होता है. ठीक है, मतलब मैंने आपको बोला ना कि ये दोनों की तरफ से एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की तरह रहता है, और वो यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस करेगा
that will be ultimately called as the fetal ejection reflex. Now, this triggers the release of a hormone which is called oxytocin. Oxytocin कहाँ से release होगा? Maternal pituitary से. ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ना पूछता है कि ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज करता है, मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है कि बेबी से रिलीज होता है. बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स ऑफन दे गेट कंफ्यूज्ड. उनको लगता है कि बेबी इज रिलीजिंग द ऑक्सीटोसिन, बट नो, ये मैटरनल हार्मोन इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मदर रिलीज करती है. Now, oxytocin ultimately acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. मतलब ऑक्सीटोसिन का लेवल आप समझ सकते हैं कि धीरे 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 वो बढ़ता ही चला जाता है, और जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे. So this stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretes continuous, resulting into stronger and stronger uterine contractions, leading to the expulsion of the baby of the uterus through the birth canal, and that process is called parturition. तो जितना contractions होगा उतना ही ज्यादा expulsion हो जाएगा, and finally एक ऐसा point आएगा जिसमें कि baby is ultimately expelled out from the mother's uterus, and that too through the birth canal, passing through the birth canal, and this process is ultimately called as parturition. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. So what do you think the doctors inject to induce the delivery? So definitely doctors जो होते हैं, in case अगर कभी-कभी mother में mother के uterus में normal amount of oxytocin release नहीं हो पाता है ना, तो उस केस में डॉक्टर्स हमेशा ऑक्सीटोसिन का इंडक्शन कराते हैं मदर की यूट्रस में, so that जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होगा, सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस होगा, उतना ही ज्यादा डिलीवरी के चांसेस जल्दी होंगे. Now, the last thing is that कि mammary glands जो होते हैं ऐसे फीमेल्स में जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, they will also undergo process of differentiation under the pregnancy, during the pregnancy process basically, and they will start producing milk at the end of pregnancy by the process of lactation. So lactation का मतलब क्या हो जाएगा? Lactation का simple meaning होता है that this is going to produce milk at the end of pregnancy, and this helps the mother in feeding the newborn baby, and the milk which is produced during the initial few days of lactation, that is called as colostrum. उसको हम colostrum बोलते हैं. ठीक है, तो colostrum जो होता है, colostrum important इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो colostrum होता है ना, this is rich in very very important antibodies and specifically immunoglobulin A इसमें मिलता है, जो कि आपका डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि कभी भी बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको हमेशा मदर के मिल्क से फीड करना चाहिए. एंड द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि मदर का मिल्क में इनबॉर्न इम्यूनिटी होता है, बिकॉज इट कंटेन्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड स्पेसिफिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज उनमें मिलता है. ठीक है, which contains several antibodies, which is absolutely essential to develop resistance to the newborn babies. So breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. So that's why it is always encouraged by the doctors to go for the process of breastfeeding as well. All right. So this is all about the parturition and lactation that we have discussed. And with this, we have come to an end of this chapter. All right. एक बार हम इसके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, so that if you people are appearing for your board exams, तो वो भी क्लियर हो जाएगा. ये जो स्टार्टिंग के थे, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो क्वेश्चंस हैं, these are the minute questions which you can do it on your own actually. ठीक है, बट फिर भी एक बार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको. Humans reproduces sexually, undoubtedly. Sexual reproduction humans में सिर्फ होता है, जो हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, apart from that, humans जो होते हैं, they are considered to be as viviparous. All right, because they give birth to young ones. Fertilization जो होता है humans में, that is considered to be internal. That means inside the female body होता है, that's why it's internal. Male and female gametes are haploid in case of humans. Zygote is diploid. क्यों zygote diploid होगा? क्योंकि वो fusion का product है. That's why it is diploid in
नेचर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So next is that the process of release of ovum from a mature Graafian follicle, that is called as, this is basically called as ovulation. तो इसको हम ovulation consider करेंगे. ठीक है, Graafian follicle से जो release होता है. Now ovulation is induced by a hormone which is called as LH hormone. LH surge के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, luteinizing hormone. तो ये हो जाएगा. The fusion of male and female gamete is called fertilization. Undoubtedly इसको हम fertilization consider करेंगे, ये हो जाएगा. Then fertilization takes place in the ampulla. Ampulla भी बोल सकते हैं, या आप उसको ampullary इसमें junction भी consider कर सकते हैं. Zygote ultimately divides to form dash, which is implanted in the uterus. Zygote divides to form blastocyst. तो अभी मैंने आपको वो जो structure draw करवाया था, वो blastocyst का structure था. Now the structure which provides vascular connection between fetus and uterus, that is called as placenta, जो कि structural and functional unit consider किया जाता है between the mother and the fetus. Now you have to draw a label diagram. ये तो diagrams के drawing से related है, तो ये आप कर लेंगे. Male female reproductive system. Then two major functions each of testis and ovary. तो testis का function का अगर हम बात करेंगे तो उनका दो function ये होता है that is going to produce the testicular hormone. एक तो ये sperms का production करता है. So testis जो होगा, so that basically produces, इसके दो functions की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला function हो जाएगा to produce sperm. And the second important thing to produce testosterone, which is the androgen. ये हो जाएगा. क्लियर? उसी तरीके से ओवरी का हो जाएगा. ओवरी जो होता है वो ओवम को प्रोडक्शन करेगा एंड ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे. सो दैट इज द केस. क्लियर? नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो ये भी आप बना लोगे. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस. तो ये सब सारे डिटेल्स वाले क्वेश्चन है दैट यू नीड टू नो इट. नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. अनडाउटेडली आपका दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, एक एलएच हो जाएगा और एक एफएसएच हो जाएगा. LH जो कि लेडिक सेल्स पर एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, और FSH जो कि पूरा का पूरा फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, एंड इट विल आल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. दैट मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड्स. ये थोड़ी डिटेल वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. Then says that defines spermiogenesis and spermiation. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि be very specific in the terms. ठीक है. Spermiogenesis का मतलब हो जाएगा कि आपका, जब हम spermiogenesis की बात करते हैं तो spermiogenesis में sperms का formation होगा from spermatids. If you people remember, ठीक है. और जो spermiation होता है, spermiation is basically a process of release of sperms, you can say. So this involves the release of sperms after getting nourishment from the Sertoli cells. So this is the basic difference between spermiogenesis and spermiation. So well-labeled diagram of sperm. Then what are the major components of seminal plasma? Definitely seminal plasma is rich in fructose, calcium, enzymes, then sperms, देन आपका ग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फाइब्रिनोजेन, ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं. नाउ व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड? तो डक्ट जो होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डक्ट का मेन काम होता है कि वो पैसेज प्रोवाइड करता है ना, सो दैट टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करे वो फाइनली मेल बॉडी के बाहर रिलीज हो जाए. ग्लैंड्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग सेमाइनल प्लाज्मा. वो सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशंस करते हैं. ठीक है. तो ये है what is oogenesis, and give a brief account of oogenesis. तो पूरा process आपको explain करना है इसमें. Section through ovary you have to draw it. Then there is a section of the Graafian follicle that you have to draw it. Name the functions of corpus luteum. Corpus luteum का function क्या होता है? To secrete progesterone. Endometrium का क्या function है? To undergo cyclical changes during menstrual cycle. एक तो ये हो जाएगा. And दूसरा function important ये होता है endometrium का, to support pregnancy. क्योंकि endometrium maintain होगा तभी प्रेगनेंसी सपोर्ट हो पाएगी. तो दो फंक्शन हो जाएंगे. एक्रोसोम का फंक्शन ये है कि टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक हाइलुरोसिन, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन, जो कि हेल्प करेगा बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम.
स्पर्म टेल मूवमेंट में हेल्प करेगा, एंड फिम्बरी जो होता है इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ अगर एनसीईआरटी का पोर्शन याद है तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। In fact, also you can crack the NEET as well, because questions इसी के रहते हैं, बस वो थोड़ा सा उसको उसके लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, that's it. Now you have to identify the true and false statement. All right. Now androgens are produced by the Sertoli cells. तो इसमें आपका हो जाएगा Sertoli cells जो होते हैं वो androgens नहीं produce करते. Androgens are produced by Leydig cells. All right. So this is basically this statement is false. Spermatozoa gets nourishment from Sertoli cells. This is true. Leydig cells are found in the ovary. False. Leydig cells are found in the seminiferous tubules. आपको याद होगा अगर तो. Leydig cells synthesize androgens. True. Oogenesis takes place in corpus luteum. False. Oogenesis ovary में होगा, ना कि corpus luteum में. Menstrual cycle ceases during pregnancy. True. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. This is also true. Okay. Now, what is menstrual cycle? And which hormone regulates menstrual cycle? तो कुछ couple of hormones हैं जो regulate करते हैं, जिसमें आपका LH, FSH, estrogen, progesterone, ये 4 important hormones आते हैं, तो वो आपको mention करना है. Parturition क्या है? अभी हम लोगों ने देखा that this is the process of the expulsion of the baby after the expulsion or delivery of the baby after the completion of the 9 months of pregnancy. ठीक है? Which hormones are involved in the regulation of parturition? तो ऑक्सीटोसिन है, देन स्पेसिफिकली तो ऑक्सीटोसिन ही हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वो तो प्लासेंटा एक्चुअली रिलीज होता है, बट मेन हार्मोन आपको सिर्फ बताना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन. ठीक है. नाउ इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड टू गिविंग बर्थ टू डॉटर्स. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न, ये इस पे बेस्ड होता है. ठीक है, जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम्स मेल का और फीमेल के कंटिन्यूएशन से, दैट मींस डिफरेंशिएशन से हम पता करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द केस. नाउ हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय अ ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ? सो एक ओवम ही रिलीज होता है ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू एक मंथ में. हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस के केस में भी एक ही ओवम रिलीज होता है, बस फर्क इतना होता है कि माइट बी द कंडीशन कि वो स्प्लिट हो जाए दो में. Would your answer change if the twins were born fraternal? ठीक है, तो आपका ओवम कभी भी रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ओवम इज ऑलवेज वंस, एक ही होता है, बट वो फिर आगे जाके मतलब एम्प्यूला के पास जाके या इन्फंडिबुलम के पास जाके माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वो स्प्लिट हो जाए. ठीक है, लेकिन रिलीज होते टाइम एक ही रिलीज होता है. ठीक है. Now how many eggs do you think were released by the ovary of a female dog which gave birth to 6 puppies? सीधी सी बात है, तो इसमें इनके थ्रू आपका एक ही ओवम रिलीज होगा. ऑलराइट, एंड इनमें भी एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो कंटिन्यू होता है, व्हिच इज क्योंकि आपका अलग उसमें के कैटेगरीज में आते हैं. सो दैट्स व्हाई 6 आपका जो ओवम है दैट इज रिलीज दैट गिव बर्थ टू 6 पपीज एज वेल. सो दैट इज द केस. ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर का हमारा पैटर्न है ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया विद द कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज चैप्टर एज वेल. एंड इसके प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल जाएंगे, यू विल बी गेटिंग इन DPPs, so you can practice the MCQs of this chapter as well, so that it will be helpful for your NEET point of view. All right, and I hope चीजें आपको समझ में आई होंगी. And in your next lecture we will be discussing up and taking up a very new chapter, EMERT batch के लिए जो कि हम लेंगे, and then we will again be discussing each and important component of your NCERT as well. All right, thank you.